Hello and a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you all the latest news and updates of top events from cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Manoj Zara. And Ruchi, let's get started with the top headlines of the day. Yes, so the top story for today is Indian crypto trades and payments continue to remain in limbo as crypto exchanges fail to find an alternative to UPI. CoinDCX has increased the minimum deposit bar from 100 rupees to 3,000 rupees. Other exchanges are likely to follow suit soon. Meanwhile, daily trading volumes on Indian crypto exchanges, which collectively service about 15 million people, have fallen by between 85% and 95% since peaking last year. WazirX, India's biggest crypto bourse, saw volumes drop 93% from an October high. So इसके बारे में अगर हम बात करें तो जैसे RBI ने अभी UPI पेमेंट्स बंद कर दी हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट जो है देखने को मिला है ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। ऑलराइट, तो रुचि, हम सबसे पहले तो ये एक सीक्वेंस हम हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि इसका सीक्वेंसिंग क्या है। फर्स्ट इज लीगल एंड इलीगल एस्पेक्ट। हमने बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट से बात की और ये जो UPI का जो एपिसोड है वो कहाँ पे शुरू हुआ, तो lot of market participants believe that there is a legal and illegal aspect as far as cryptocurrency is concerned. There is lot of clarity जो आनी बाकी है. So अगर कुछ legal stands अगर होता है and there is उसको illegal करार नहीं किया गया है, तो वो बीच में situation है, and this is the reason why there is a confusion. And point number 2, there is the direction has come from the RBI to stop the UPI payments because there are broader concerns as far as अगेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो ये हमारा व्यू नहीं है, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स का व्यू है कि वहां पर देयर इज अ कंसर्न एज फार एज रूपी इज कंसर्न, तो उनको एक ऑल्टरनेटिव पेमेंट टू रूपी नहीं चाहिए। अभी दैट इज वेरी क्लियर, दे हैव मेड द स्टैंड्स रियली क्लियर दैट दे आर हेंस दे हैव स्टॉप दिस UPI। एंड पॉइंट नंबर 3 अगर हम बात करें तो अगर बजट की अगर हम बात करें तो लगभग 30% टैक्सेस उन्होंने लेवी किया हुआ है, एंड देयर इज 1% TDS जो इम्प्लाई हो जाएगा from July 1st onwards. Of course. So April 1st and July. So there are a lot of things that are happening. There are a lot of exchanges who have come out in the media and काफी vocal हुए हैं, and although they support this tax structure, but there are broader concerns as far as continuity is concerned. 30% tax तो levy किया हुआ है. So this is actually it's eating your profits. So if you make a profit, so you have to pay 30% out of it. And अगर आप 1% TDS अगर आप भरते हो, तो that means if you're either making a profit or you are making a loss or making a speculative bet if you are trading, so उसको एक this is considered to be as kind of a discouragement, discouraging the trade, the aspect going forward. And जो चौथा जो है, there is a concern over money laundering. So अगर आप if you will go back and we will say that why in the budget there is the loss has को ऑफसेट नहीं कर सकते। यूजुअली कैसा होता है कि अगर आप प्रॉफिट करते हैं एक एसेट में और दूसरे में लॉस करते हैं, तो दोनों को मिक्स करके अगर जो होता है वो ऑफसेट होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है बिकॉज देयर इज अ मनी लॉन्ड्रिंग कंसर्न। अगेन मार्केट पार्टिसिपेंट्स बिलीव और एनालिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर एक मनी लॉन्ड्रिंग का एक एस्पेक्ट है जो कि एक गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। तो ये कैसे होता है हम हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव परचेज्ड द क्रिप्टो करेंसी वर्थ से मे बी $30,000 in India, and it is there in your wallet, and if you transfer it to the other country, say for example Dubai, we are not saying that this is happening, this is just an example, just an example. If you transfer this money to your wallet which is in Dubai, and then you sell this and book a loss over here, saying that you have purchased in 30 and you have sold it in $10,000, so you book a loss of 20,000, and over there you sell it at say maybe $50,000 and make profit and pay in single digit taxes or zero taxes as far as taxation is concerned. So this is the situation the government is concerned about, and hence the entire UPI episode is occurred. All right, let's move on to the other story. Speaking of WazirX, the biggest news of the week is the WazirX CEO Nishil Shetty and co-founder Siddharth Menon have shifted their base to Dubai a few days ago. Although WazirX still has an office in Mumbai and Bengaluru, the move comes after the rise in regulatory and tax woes in India's crypto industry, triggering brain drain from India to other crypto-friendly countries. ये तो होना ही था. In a way, I think इसका लोगों ने स्पेकुलेशन किया ही था, बिकॉज अगर इंडिया में इतने सारे रेगुलेशंस होंगे, इतने सारा टैक्स बर्डन होगा, वहीं आपको सामने दिख रहा है एक कंट्री है जो कि बहुत क्रिप्टो फ्रेंडली है और कोई टैक्सेस नहीं है,
तो कहीं ना कहीं तो आई थिंक बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज दे विल बी ल्योर्ड एंड ललचाएंगी वहाँ जाने के लिए। सो ऑफ कोर्स रुचि, हमेशा ऐसे ही देखा जाता है कि जहाँ पर जो कंट्री जो टैक्स फ्रेंडली है, हमने दुबई एक्सपो भी कवर किया था, हम मियामी इवेंट पे भी गए थे और हमने बहुत सारे वहाँ पर जो कंपनीज है उनसे बात की थी और उनका यही मानना है कि अगर इंडिया थोड़ा सा अगर ट्वीक करता है टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, देयर विल बी अ मास, यू नो, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु आर वेटिंग टू कम इन इंडिया, बट देयर इज सम क्लैरिटी एज फार एज रेगुलेशंस इज कंसर्न्ड। आगे की न्यूज में हम हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएंगे कि जो एक्सचेंज के एमडीज एंड सीईओज है उनका क्या व्यू है। लेट्स हैव अ लुक। So moving on, however, investors remain gung-ho about the future of Indian crypto industry as Indian crypto exchange CoinDCX raised over $135 million in Series D funding, doubling the unicorn's valuation to $2.15 billion from $1.1 billion. Amid falling volumes and back-breaking taxes. Exactly. Having said that, recently two big players from Indian crypto industry voiced their opinion about country's crypto regulations. You know, this is something, you know, which has been, you know, we have been watching from long time. So जो संदीप नेवाल है, जो co-founder हैं पॉलीगॉन के, उन्होंने ये भी कहा कि एक सिंगल रेगुलेशंस का एक जरूरत है। एंड फॉर दैट मैटर, ये जो CoinDCX की जो स्टोरी हमने हमारे व्यूअर्स को बताई है, और वहाँ पर ऐसे टाइम पर जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट इज कमिंग डाउन, देयर आर लॉट ऑफ कंसर्न एज फार एज ग्लोबल न्यूज इज कंसर्न। रशिया और यूक्रेन को लेकर एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है, जियोपॉलिटिकल एज वेल एज यू नो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी भी है, यहाँ पर राइजिंग रेट्स इन यूएस का एक इन्वायरमेंट भी बना हुआ है। ऐसे टाइम पर अगर उन लोग अगर एक कोई एक्सचेंज अगर एक फंड रेजिंग एक्टिविटी करता है, इट इज अ बिग पॉजिटिव। दैट मींस द बिजनेस आउटलुक व्हिच द एक्सचेंज हैज ड्रॉन बहुत ही सही तरीके से वो मैप्ड है और यहाँ पे लेकर उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट पर भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव गॉट दिस फंडिंग। ऑफ कोर्स, मतलब इन्वेस्टर्स देखते हैं इंडिया में क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर। श्योर। Moving on, the topic of crypto regulation isn't just crippling India but the entire world. This week's India Finance Minister Nirmala Sitharaman, while speaking at an International Monetary Fund seminar, warned that the money laundering and the financing of terrorism remain the two biggest threats to the cryptocurrencies and pitched an international effort to regulate the noble asset class. The IMF seems to agree with our finance minister because its Global Finance Stability Report, the IMF recommended regulators concentrate on the elements of the crypto ecosystem surrounding DeFi. There are a lot of concerns as far as you know exchanges are concerned, because यहाँ पर वॉल्यूम भी ड्रॉप हुए हैं। यूपीआई का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है। आशीष सिंघल जो है कॉइनस्विच कुबेर के को-फाउंडर हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कल वो बात कर रहे थे एक सेमिनार में, उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर यू नो देयर हैज टू बी अ सिंगल रेगुलेटिंग बॉडी जहाँ पर विच कंप्राइजेस ऑफ सेबी, जीएसटी काउंसिल, फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई से भी अगर कोई एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, दैट मींस इट विल हैव अ लॉट ऑफ वैल्यू एज फार एज यू नो रेगुलेशन इज कंसर्न, और उसे रेगुलेट भी करना चाहिए। और अगर उसे रेगुलेट हम करते हैं, अगर इंडिया उसे रेगुलेट करता है, दैट मींस इट विल स्टॉप ऑल द प्लेयर्स हु आर गोइंग आउट एज फार एज पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस आर कंसर्न, जहां पे उन लोग ट्रेड कर रहे हैं, और for that matter to avoid taxes. तो ये सारी जो क्लैरिटीज हैं उनको चाहिए, एंड आई थिंक सो इंडियन गवर्नमेंट शुड मूव फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ यू नो क्लियरिंग दिस क्वेरीज ऑफ दिस एक्सचेंजेस सो दैट दे अट्रैक्ट लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जैसे दुबई कर रहा है। आई मीन दुबई हैज गॉन अहेड, यू नो वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक ओपननेस के साथ में उन्होंने अपनी पॉलिसीज चेंज की है, और सारे के सारे पूरे द इंटायर वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स दुबई बिकॉज ऑफ इट्स टैक्स स्ट्रक्चर and its crypto friendly environment which is created. So moving on, regulations are for those who want to follow the rules, but what about the black hat hackers who never misses a chance to exploit a weakness? Beanstalk, a credit-based stablecoin protocol built on Ethereum, became the latest DeFi project to suffer an exploit of $182 million. The attacker used a flash loan exploit to drain the protocol's funds within a matter of seconds. The attacker also donated $250,000 to Ukraine before moving the funds to Tornado Cash. The Bean token, once pegged at $1, dropped to nearly zero. Beanstalk Farms is appealing to the hacker, offering a $1.8 million white hat bounty if the exploiter returns 90% of the stolen funds. Let's hope the hacker accepts the offer and return the stolen funds. वैसे बहुत ही मैं कहूँगी शरीफ और ईमानदार चोर है जिसने डोनेशन भी किया उसमें से, अमाउंट में से। नहीं रुचि, क्या होता है कि यहाँ पर हैक्स तो ऑल्दो बढ़ रहे हैं, और इनफैक्ट ये ट्रेस भी होते हैं। और जैसे एक्सी इन्फिनिटी का सबसे बड़ा जो हैक था वो भी अभी बाइनेंस ने उसे ट्रेस कर दिया है, लगभग $5.6 मिलियन वापस उन्होंने ट्रेस कर दिया। नॉर्थ कोरिया
से तरफ कुछ तो कनेक्शन निकला है. So in short बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर this can be traced और अगर ट्रेस हुआ तो वो फंड्स वापस भी आते हैं. So stolen funds are rarely recovered, but in surprising turn of the event, Binance CEO Changpeng Zhao has announced that the Binance has recovered $5.8 million worth of stolen funds originating from the last month's massive hack of over $625 million against Axie Infinity Bridge, the Ronin network. CZ revealed that the North Korean hacking group believed to be responsible for the audacious attack. जैसे हमने हमारे व्यूअर्स को बताया था कि यहाँ पर उन्होंने there is an effort as far as the entire ecosystem is concerned. सबसे बड़े एक्सचेंज हैं और अगर वहाँ पर Axie Infinity का भी काफी ज़्यादा एक्टिविटी होता है as far as buying and selling and the volume is concerned. अगर इकोसिस्टम में अगर कुछ भी अगर गड़बड़ होती है तो everyone if comes together and this is the outcome, this is the positive outcome which is and there are steps, there are certain agencies also which are been involved, and we hope that there is some traction as far as fund recovery is concerned. Bilkul, moving on, Bitcoin and cryptocurrencies started and ended the week on a muted note, with Bitcoin struggling to rise above $40,000 on Monday as investors turned risk averse. However, midweek, Bitcoin gathered momentum to climb above $42,000 on hopes that SEC will likely approve a spot Bitcoin ETF this year. Investors turned optimistic after SEC approval. Tericum Bitcoin's futures ETF filed under a separate rule which will be applicable for any approval given to spot. Alright, moving on. Stablecoin seems to be back in the flavor amid mounting volatility in crypto market after Near Protocol and Tron blockchain announced the launch of their native stablecoins. Near Protocol launched its own USN stablecoin on testnet to compete with Terra's USD. Near native stablecoin USN could follow a similar mechanism on Terra's USD, where Near tokens would be burned when users want to mint the stablecoin to increase its demand. Meanwhile, Justin Sun, founder of Tron blockchain, has announced the launch of its own native stablecoin called USDD, which keeps dollars and other assets in bank accounts as backing. The USDD will be available on Ethereum and BNB chain when launched via the Bittron network's cross-chain protocol. Now let's move on the NFT segment. I believe this was really busy week for this non-fungible tokens, Ruchi. Of course it was. Indeed, this week we saw some big moves in the NFT space, starting with crypto exchange Coinbase. Long-awaited NFT marketplace was launched in beta form for select customers after the exchange first unveiled plans for it in October. Right, exactly. The second big news in the NFT space was the debut of NFT projects Moonbirds. The collection of 10,000 PFPs has racked up 69,000 Ether, amounting to around $207 million in total sales in matter of just days. Of course. And third big news was Rario, a non-fungible token platform for cricket, raised a $120 million Series A round led by Dream Capital, the venture capital arm of fantasy sports platform Dream Sports, to further launch both companies into Web3. Rario recently signed a partnership with Cricket Australia and the Australian Cricketers Association to create an Australian cricket metaverse. Absolutely. However, there is one more partnership that has captured everyone's interest in India about the metaverse. Yes, of course, I am talking about ISRO and Telangana government joint venture in metaverse. This week, the Telangana government's collaboration with Indian Space Research Organization unveiled its space tech framework on PartyNet metaverse with a vision to establish Telangana as a global reorganized one-stop destination for the space technology. It was India's first ever official event hosted on metaverse. Let's have a look at Wow, it's fantastic, especially because this was designed by an Indian firm, a Hyderabad-based AR, VR and robotics company responsible for creating PartyNet metaverse platform. Meta founder and CEO Mark Zuckerberg, during his visit on India last year, said that India would play a key role in development of metaverse. Well, the science looks promising. Only time will tell how much bigger role India will play in the fast developing virtual world. So that's all there is in today's weekly wrap. This is Manoj Dara. And this is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to cryptoTV and have a great weekend. Thank you so much.